Hey everyone, welcome to my YouTube channel. This is the first class of this online course. इस क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी वेरियस मीडियम्स ऑफ कलर्स इंक्लूडिंग वाटर कलर एंड कौन कौन से ब्रशेस होते हैं. Then I will tell you about the difference between normal and watercolor sheets and how to use them, and after this I will tell you the components of watercolors. So first of all, these are artist watercolor cakes of 18 shades. These are of Camlin company, and in online classes I will use these colors. So मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे हैं दिखने में. These are like little cakes in pans, dry to touch, and you can read the color names here accordingly. Okay, these are dry to touch, but we have to add water when we will use these colors. Okay, so these are in little cakes. I love these colors, really. I always use these colors, and these are of Winsor and Newton company. I have used them a lot. You can see. बहुत अच्छी क्वालिटी के कलर्स हैं ये. वाटर कलर्स के अलावा थोड़ा सा आपको बाकी कलर्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ. दिस इज़ फैब्रिक कलर. ओके, यू शुड नो अबाउट हाउ दीज लुक्स लाइक. अगर आप शॉप पे ख़रीदने जाओगे तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कलर्स के बारे में. देन आई विल शो यू आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर्स. ओके, सो वन मोर थिंग, जैसे एक्रेलिक कलर्स होते हैं इन ट्यूब्स, देयर आर ऑल्सो वाटर कलर्स इन ट्यूब्स. यू कैन ऑल्सो परचेज दैम. ऐसे ही ट्यूब्स में दिखेंगे वो, मगर वो वाटर कलर्स होंगे, बट दीज आर एक्रेलिक कलर्स. और एक्रेलिक कलर्स के लिए भी हम वाटर यूज़ करते हैं. अनदर टाइप ऑफ कलर इज़ ऑयल कलर्स. आप पेंटिंग देख सकते हैं कि ऑयल कलर्स के साथ हम कैसे पैची लुक दे सकते हैं पेंटिंग को. एंड यू कैन ऑल्सो सी ऑन द बॉक्स ऑफ एक्रेलिक कलर्स. सी. एंड जो ऑयल कलर्स हैं वो भी ऐसे ही ट्यूब्स में आते हैं, बट जैसे एक्रेलिक एंड वाटर कलर्स के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं, ऐसे ही ऑयल कलर के लिए हम ऑयल का ही यूज़ करेंगे. इसीलिए इनका नाम क्या है, ऑयल कलर्स. जो पहले दिखाए मैंने वो आर्टिस्ट ऑयल कलर थे, एंड दीज आर स्टूडेंट्स ऑयल कलर्स. दोनों देखने में सेम ही होते हैं. एंड देन आई विल शो यू pencil colors. There are also watercolors in the form of pencils. उनको हम पहले पेंसिल की तरह यूज़ करते हैं, then we apply water. So, but these are pencil colors. Okay, these are in the form of pencils. Now I'll show you soft pastel colors. पेस्टल्स में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है. ऑयल पेस्टल्स भी होते हैं, ठीक है, बट दीज आर सॉफ्ट पेस्टल्स. दीज आर वेरी इजी टू यूज़. दीज आर वेरी सॉफ्ट. यू कैन सी हियर, ऐसे दिखने में होते हैं. ठीक है जी. सो यू कैन सी द पेंटिंग. सॉफ्ट पेस्टल्स के साथ कैसी पेंटिंग बनती है आप देख सकते हैं. So after various mediums of colors, I am going to tell you about types of brushes. You can see here a lot of brushes. These brushes are flat brushes. जो आगे से flat होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, flat brushes. You can see ये आगे से round नहीं होते, ठीक है, उनको flat कर दिया गया है. Okay, and I'll show you then round brushes. These all are round brushes. So different sizes के आप brushes देख सकते हो.
So now I am going to tell you about the shades. We are going to use this Canson sheet of watercolor. You can see closely. This is 300 GSM paper. You can see the texture on the sheet. So you should use actual watercolor sheet for using watercolors. As you can see, this is normal sheet. You can compare these sheets. Uh, which sheets are not too much heavier. These are not for watercolors. Let me show you what will happen if we will use copy paper or normal drawing sheets for watercolors. As you can see, buckled paper spilling in the sheet. So this is unsatisfied. On the other side, you can see watercolor wash on 300 GSM paper. So before starting the techniques of watercolor, you should know the basic things about watercolor. So what is watercolor? Meaning क्या है watercolor का? So these are paints. These are paints that are mixed with water. ओके तो वाटर कलर नाम से ही क्लियर है कि वो पेंट्स जो पानी के साथ मिक्स करके हम यूज़ करते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं. दोज कलर्स आर वाटर कलर्स. नथिंग डिफ़िकल्ट इन दिस. सो basically these colors consists of two main components. Which are these components? Let me tell you. First of all, first component is pigments. Okay, first component is pigments and the second one is binding mediums. Okay, so these are the main components of watercolors: pigments and binding mediums. So now let me tell you about the type of pigments. There are lots of pigments which are used for making various colors. For example, one of the most important organic pigment named as lapis lazuli, which is used to make blue color. This is just one example of pigments and there are lots of other pigments. Pigments are of two types, organic and inorganic. Okay. Then we have binding mediums. There are a lot of use of natural binding mediums such as gum arabic or synthetic compounds that are used as binding mediums in watercolors. So these are some basic things which are important to know. So in the next class, we will cover the most important watercolor techniques. If you have any query, you can ask in the comment box. Also share the video with your friends. Press the bell icon to get latest video updates. Stay connected and be safe. Thank you.